Hello all. Here I Komal Sharma welcomes you all on behalf of Gargi classes. So today I'm going to discuss all about our another literary term which is named as acephalous, as our series of English literary terms have been going on all according to alphabetical order. So today it's acephalous, about which I'm going to detail you all about. Okay, then, without taking much of your time, I am moving ahead with the particular definition of acephalous. So, basically, acephalous is the English word was borrowed from medieval Latin in which it meant headless. So, basically, the English word acephalous was borrowed from medieval Latin in which it means headless. सो होप आपको समझ में आएगा जो पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म एसेफलस है वो मेडिवल लेटिन से डिराइव्ड है. ऑल राइट. एंड इसका मतलब मेडिवल लेटिन से जो है वो इसका मतलब बेसिक है हेडलेस, विदाउट हेड. ऑल राइट. In poetry, a line of verse is acephalous when it's missing an initial syllable suggested by the poem's meter. This is also known as headless line. So basically, in poetry, while a line of a verse is acephalous when it's missing an initial syllable suggested by the poem's meter, this is also known as headless line. So hope you would get the meaning of this particular word acephalous. acephalous medieval Latin से लिया गया है जिसका particular meaning होता है headless, without head. All right. अब किसी भी वर्ड्स की अगर एक पर्टिकुलर लाइन हम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे जो मीटर का जो मेन रोल होता है, मीटर इज ऑल अबाउट द अनस्ट्रेच एंड स्ट्रेच सिलेबल्स. तो वहाँ पे जो मीटर है वो फर्स्ट जो सिलेबल जो सजेस्ट करता है वही वहाँ पे मिसिंग हो तो उसको बोलते हैं हेडलेस लाइन. ऑल राइट. जैसे होती है आयाम्बिक पेंटामीटर. आयाम्बिक पेंटामीटर में 5 अनस्ट्रेस सिलेबल एंड देयर आर 5 स्ट्रेस सिलेबल. अगर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द लाइन, अगर लाइन के शुरू में ही उसका फर्स्ट जो अनस्ट्रेस सिलेबल है वो वहाँ से मिसिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेडलेस लाइन. तो किसी भी वर्ड्स की किसी पर्टिकुलर लाइन का जो फर्स्ट जो सिलेबल होता है विच इज सजेस्टेड बाय द मीटर, अगर वो वहाँ पे मिसिंग है, नहीं है, तो उस लाइन को हम पर्टिकुलरली बोलेंगे हेडलेस लाइन. और इस पर्टिकुलर टर्म को हम नेम देंगे acephalous. Hope you understand. The meaning of acephalous is headless, the line which is without head. All right. So इसका particular meaning है. Hope आपको समझ में आ गया होगा. Still, if you have any kind of query, doubt, question regarding this particular literary term, which is very easy to understand, still you have anything in your mind, you can directly email us upon our email ID, which is gargiclasses.edu@gmail.com. Do not forget to subscribe our channel. Do like the video if you think whatever information about acephalous I have given is all enough. And of course, do not forget to press the bell icon to get the notification of our upcoming video. So thank you so much for watching this video.